मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 7 साल के अंदर मैंने एक चीज़ सीखी है जिससे बिजनेस आपका बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है, और इस पॉडकास्ट के अंदर मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। एक यूनिक मेथड क्या होता है और मैसेजिंग क्या होती है। ये दो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट होती है जो 99 बिजनेस ओनर इस चीज़ को मिस करते हैं। सारी दुनिया लगी रहती है फनल्स, फेसबुक एड्स, सेल्स, सब इसी चीज़ में लगे रहते हैं। लेकिन अगर आप अपना यूनिक मेथड सही कर लोगे और सेल्स पार्ट को अगर आपको इंप्रूव करना है, मैसेजिंग सही कर लोगे, तो आपका ऑफर ही मार्केट में डिमांड क्रिएट करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो 99 बिजनेस ओनर चीज़ें करते ही नहीं हैं। और इस पॉडकास्ट के अंदर हमने वही चीज़ डिकोड करी और मैंने अपने दोस्त को बुलाया जिसका नाम है संतोष, जो कि मैसेजिंग पार्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो चलते हैं पॉडकास्ट के अंदर और जानते हैं यूनिक मेथड क्या होता है और मैसेजिंग क्या होती है। हेलो संतोष भाई, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट, क्योंकि आपसे जो मेरी मुलाकात हुई है वो एकदम अचानक से हुई है, और जो हमारा बॉन्ड बना है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल का बना है। एंड इट्स लाइक ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, राइट? या एंड जो आपने मुझे चीज़ें सिखाई हैं और जो मैंने आपसे चीज़ें सीखी हैं, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। तो संतोष भाई, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ऑडियंस को अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं, आप कौन हैं, कैसे स्टार्ट हुए, ये सारी चीज़ों के बारे में। First of all, thank you so much, Daria, for inviting your show, and that really means a lot. The one major thing that I like about your podcast is you always stick out the scoop when you try talking to every single person inside the podcast. It could be a lot of different people I've seen, right? So that's what it is about. So coming back to my journey, 2012 was the time where I thought of doing a business and not to get into any other stream. And I studied in one of the most reputed colleges in Karnataka, which is PS Institute of Technology, and dropped down at the second year from the engineering for the reason that I wanted to build something super solid. But then I was more way ahead from the trend. When it comes to building the business, what I thought was like, I should build a business that can make good amount of money for myself and will also be impacting the society. Then all of a sudden I tell my dad over the call on 2014, Dad, I'm going to leave my college. I'm going to come back. I'll do something right here, having the good funds. Then my dad was like, better if you do that, you'll be ungraduated. And it is not something that you should be doing it. You should be doing something wherein you should be completing the loop and then coming back. Because it wouldn't be fair if at all you leave your engineering college right away and then come start a business. But then I gave the thought at that night. Of course, Dad is right. But let me also take my decision. And then I came back home, started my wholesale grain merchant business. For first 2 months, I was not able to make huge amount of transactions. But then I was able to, encourage lump of profits in next 8 months. You remember those times wherein the tur dal prices, it was like from 40 to 60 and 60 to 100 rupees all of a sudden due to drought and these and stuff. That is when I thought, man, it's not only about what you're good at. It's also about the opportunity that you need to come and grab. That is when I thought of, I need to make something big. I mean, I can't be right here. Let me go to Bangalore. Let me start making something big. That is when I started coming into online grocery business wherein Big Basket and everyone were doing really good. But then that didn't work out for me. Because, all these college friends you have, you're my friend, you become the chief logistics officer. You're my friend, you become the chief operating officer. You're my friend, you become the chief executive officer. We made all this kind of the team without knowing what the management of science when it comes to building a team is, and started a big business. But that didn't work out. My investment of the time was only on the operations, on how well can I make it. But when I came to executing, I failed miserably. Then converted the model into franchising model. Even at franchising model, due to the mismanagement and due to the franchises who were also not kind of good, I was able to lose a lot of money. Then I understood, whether you want to build a product, whether you want to build a service, whether you want to build anything in life, make sure the first important point you need to worry is,
try to solve a problem and sell it. Learn the process of selling. You can sell it in digital media, you can sell it in social media, you can sell it in print ads, you can sell it everywhere. But make sure the message that what you're trying to give to people should matter the most. That is when I thought, man, no matter what happens, let me start working something on my sales. If my sales is good, I'll be able to sell it to anyone on anything. I was able to see one of your videos wherein you showed how people are getting cow dung from the Amazon on how you were able to sell it, right? So it's majorly about sales. On how ethical are you selling the quality product? So then I started my journey with sales. And then I thought of how do I make things happen? Then I came with digital products on how do I sell digital courses, these and stuff. Then in digital products, selling courses, services, consultancy. That's where I was able to make huge amount of money. And if you ask me, 99% of my success was only through selling, because I became master of selling. I learned the art of selling. I went through the science of selling. And that selling fetched me huge amount of results. Nowhere that I could ever thought of. So become the master of sales by not selling, but make them buy. And this is where the real beauty came of. Yeah. Amazing, man. संतोष भाई, बेसिकली मैंने आपकी जो पावर देखी है, द पावर जो आपके हाथों में है, वो है सेल्स एंड मैसेजिंग, जो एक्चुअल में मैंने देखी है. एंड जब हम बैठ के रेवोल्यूशन का एक फ्रेमवर्क बना रहे थे, मैसेजिंग का पार्ट, वो इतना ब्यूटीफुल तरीके से क्राफ्ट हुआ. एंड सबसे बढ़िया बात मुझे उसमें ये लगी कि जो चीज़ें मेरे अंदर थी, आपने वो चीज़ निकलवाई. देर लोग क्यों खरीदेंगे, एवरीथिंग इज यूनिवर्सल बट यू हैव टू क्रिएट अ यूनिक मेथोलॉजी. मुझे वो चीज़ इतनी पसंद आई और वो इतनी ब्यूटीफुल तरीके से क्राफ्ट हुआ. पीपल जस्ट वॉन्ट टू गेट एंटर इन टू रेवोल्यूशन एनी हाउ. उनको चाहिए, देखना है. जैसे होता है ना कि वहाँ पे लैम्बोर्गिनी खड़ी है एंड पीपल जस्ट वांटेड टू सी, यार मुझे वो चाहिए. एंड रेवोल्यूशन इज बिकम लाइक दिस. एंड आई एम सुपर थैंकफुल फॉर दैट कि हमने वो मैसेजिंग इतने ब्यूटीफुल तरीके से क्राफ्ट हुई है. संतोष भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि मैसेजिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है. देखो, लोग, पता है, मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग चीज़ें सीख जाते हैं, उनको टेक्निकल नॉलेज बहुत सारी होती है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, लेकिन वाई मैसेजिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Very good question. Let's say when it comes to building a business, be it e-learning or selling courses, consultancy, services, वगैरह, be it selling a service-based business on selling your software subscription, selling your SaaS, selling anything. I have many clients who are really working good on that. And then the third thing, be it selling on e-commerce, be it D2C, be it Amazon selling, be it Flipkart selling, and the general selling on manufacturing units or B2B selling, no matter what kind of things you take, no matter how best your product is, no matter how good you've built something that can actually help the world, as long as you do not have the ability to sell people, you cannot make money. Selling is the first tipping point that every entrepreneur should learn. And that comes through the power of messaging. There are two kind of people. One, a manipulated entrepreneurs who knows nothing but only learn the art of selling and then sell. But when people buy, product looks shit and they start scamming it. Second, people like me, people like you, and people like everyone, right? You take Zoho, you take Zerodha. There are so many people who have the world-class product, who have the world-class quality product. At the same time, they're really good at selling. But how do they sell? Many people think that selling is all about, taking the Pond's powder and going into every home and then selling for 5 rupees or 10 rupees. No, that's not selling. Selling is something that you're trying to talk to people in their language by solving their problem from your product. And to make that happen, you need to work on messaging. I'll go deep in this. See, according to us, sin square theta plus cos square theta is equal to 1.
But according to people's mindset, 3 minus 2 is equal to 1. Even though the problem for which the solution that you're trying to bring through your product, through your service, is something called as 1, when your frame of thinking is different from their frame of thinking. When your language of interpretation to people is different from their language of interpretation. Like yours is sin square theta plus cos square theta, and theirs is 3 minus 2. When these both are not getting matched with the same language, people think that you're here only to sell and not to serve on their problem. But when you talk to them in their language, in their retrospective, in their style of behavior, in their emotional intelligence, through their persuasion, by solving their problem, in exchange you're making money. That is when you're making them buy without doing any hard selling. This is what many entrepreneurs lack. Be it online entrepreneurs like e-commerce, e-learning, coaches, consultants, trainers, D2C owners, and even the B2B owners, and even the MSI owners. No matter what scale you take, you need to make sure that you're holding them through the problem and giving the right solution in their language. That is when you're making them buy rather selling it. I love this buy. I really love this word. जो अब आपका ये जो word है, make them buy. I really love this word. And जब हम इसको मैसेज को क्राफ्ट कर रहे थे रेवोल्यूशन वाला, और एकदम से वर्ड निकल के आया, मैं को ओ फिश मैन, ये क्या बन गया है. एंड मैंने एक चीज़ सीखी है संतोष भाई कि आपसे आने के बाद जब हम ग्रुप में रहते हैं तो मैंने एक चीज़ सीखी, डिजिटल मार्केटर सब हैं, सबको पता है कि फेसबुक ऐड किस तरीके से काम करता है, फनल किस तरीके से काम करता है, एवरी वन नोज एवरीथिंग, बट दे आर नॉट एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स. क्योंकि जो बेस स्टार्ट होता है ना, वो यूनिक मेथोलॉजी उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. क्योंकि अगर VSL देखें या कोचिंग देखें या कुछ भी बिजनेस देखें तो सदियों से चले आ रहे हैं. जब डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट भी नहीं हुआ था VSL तो उससे भी पहले से स्टार्ट हो चुके हैं. वीडियोस पढ़ने पे थी. और ये चीज़ें तो बहुत पुरानी है, लेकिन वही डिजिटल मार्केटर ने कोई कोर्स बनाया, किसी ने देखा, उसका कॉपी किया, उसका कॉपी करा, इसका कॉपी करा, कॉपी करके सबने बनाया. उसने कहा मैंने इससे सीखा, उसने वो चीज़ सिखाई उसको, जो टेक्निकल चीज़ हो गई, टेक्निकल चीज़ें जाके उसने वो इम्प्लीमेंट करा, वो अपना बनाया कि मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, वो चीज़ बना दी. लेकिन जो सबसे पहला स्टेप है लोग उसको मिस कर देते हैं. दैट इज मैसेजिंग. कि मार्केट में वो ऑलरेडी है, तुम ऐसा क्या यूनिक बना लोगे, या तुम कैसा क्या अलग बना लोगे जो बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है. प्रॉब्लम से मैसेजिंग एंड यूनिक मेथोलॉजी, चाहे कितना भी कंपटीशन हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, मैंने ये चीज़ यहीं से जानी है आपसे कि अगर ये चीज़ करोगे धैर्य, देन यू गोना मेक देम बाय. एंड आई लव दैट टर्मिनोलॉजी. सो संतोष, Why? Because you don't want to sell anything, Dhairya. You never want to sell. You want to solve people's problem. In exchange, you want to make money. You don't want to look like a hard salesman. Let me talk about two Z's, Dhairya. Z number one, Zoho. They are solving every individual's problem through their software. Are they ever trying to sell something? But they're solving the problem. In exchange, they are making people buy. Same with Zerodha. In Zerodha, you can find a course, right? In that, they exactly tell you how to do the stock market through using their tool on how to work on be it trading, be it options, be it investing. There's something called as Varsity, the name of the tool. If you remember that, right? In that, they teach you. And once people learn that, they feel like going ahead with Zerodha. Right. Everybody is using Zerodha. Why? Because of their simplicity in messaging, because of their simplicity in brand communication, because of their simplicity in the beauty of the product,
because they are trying to solve each and every single person's problem. In exchange, they are not making money. Not they are making money by solving the problem. They are solving the problem right away. In exchange, they are making money. That's what the real beauty comes in. संतोष भाई, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि आप पहले सुपर मार्केट बिजनेस के अंदर थे एंड डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट एंड इवन कोचिंग बिजनेस ये बहुत अलग है. आप ऑफलाइन मार्केट से ऑनलाइन मार्केट में है, जो सेंस बनता है कि एक ऑफलाइन पे बंदा काम कर रहा था, वो अपडेट कर लिया उसने, लेकिन वो स्टोर पे कन्वर्ट कर लिया. लेकिन व्हाई यू गेट इनटू डिजिटल मार्केटिंग देन कोचिंग, ये कैसे हुआ? आप कैसे घूम फिर के इस फील्ड के अंदर है? See, everything comes out with the reason. As soon as I went into the franchising business, scalability was not great. And there was huge mismanagement in the team. Right? There were 2 to 3 level of employees who were working there. And there was one kind of a time that I ended up in a way that I had to shut down all of it. Due to the family's hatred influence, due to the external reputation, I had to close all of it. And that was the time where I was also married. I didn't know how to take this forward. Then I started thinking of one thing. I need to build something that is scalable, that is sustainable, that is solving people's problem by understanding its potential, and to start with almost zero investment. To do all of it, I just had only one experience. The experience was sales was the problem I faced these many years. Let me improve on sales. And I started reading 20, 30, 40, 50 books like anything. In 1 year, there was a time where I read almost like 60, 65 books. Then I understood what we think is we need to make money by selling this product. We need to make money by selling this product. No. Sell the product to solve people's problem. If at all they feel that their problem is solved, in exchange you will get money. But there is a method to make it. I learned that method. Then I thought, if at all I should implement this method, let me implement this right now in the coaching business, or teaching people on how not to get failed like me, so that you become very good at sales. And this has helped a lot of high ticket closers. This has helped a lot of coaches, consultants, and this has helped a lot of e-com entrepreneurs. In fact, it has helped to many other different people. Many people come and talk to me saying like, Santosh, my product is so good, but why am I not able to sell? How do people get to know your product is so good? Just by looking at the graphicality in the computer, just by looking into the user interface in the computer. Let's say you've built a good website, but you are expecting sales to happen. Baba, building a website is a great thing. It's like opening a shop. But how do you get customers? When somebody visits your website, where you're solving someone's problem, but how do you solve someone's problem? But how do you make sure that people are coming to your website? Through ads, through organic trafficking, through everything. But to make that happen, of course, the work of the Facebook, the work of the YouTube, the work of every social media engine is to bring people to your shop. Be it a course or consultancy shop, be it e-com shop, be it software as a service shop. But when people come there, it's going to be your responsibility to sell it to people. But how do you sell? Through the power of messaging, through the power of influence, through the power of persuasion, through the power of solving their problem, by holding their hand right at the start to the end, so that you're solving their problem and they're happily giving you the money for the problem that is getting solved. Yeah. Hence, you're not selling, but making them buy. Amazing. संतोष भाई, सेल्स बहुत लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, और ये हाँ, और ये चीज़ लोग जो वेबिनार में करते हैं, जैसे आप वेबिनार के एक्सपर्ट हो, राइट? हम दोनों का एक सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि संतोष भाई इज़ इनटू वेबिनार सेलिंग, एंड मैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड हूँ
कि आई एम नॉट डूइंग एनी वेबिनार वर्कशॉप विदाउट डूइंग दैट। तो संतोष भाई मैंने लोगों को ना सेल्स करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, एंड ये चीज़ हम दोनों के अंदर प्लस पॉइंट है कि वी आर वेरी गुड सेल्स पर्सन्स। एग्जैक्टली। क्योंकि जो रेशो होता है, अगर हमारा नहीं हो रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो पता लग जाता है कि हाँ हमारे अंदर कुछ कमी है, और हम उसको पढ़ के जल्दी से सुधार भी लेते हैं और बात करके हम बात कर लेते हैं। तो संतोष भाई ऐसा क्या चीज़ है जो लोग सेल्स ही नहीं कर पाते? मतलब ऐसा होता है कि ये चीज़ मैंने भी फेस करी है, वेबिनार कर रहे हैं, वर्कशॉप, मास्टर क्लास, बीट एनीथिंग, हाई टिकट सेलिंग, कुछ भी कर रहे हैं, वो सेल्स कैसे कर पाए और मैक्सिमम सेल्स कैसे कर पाए, और ऐसा क्या चीज़ क्रैक करनी पड़ेगी कि वो अपने बिजनेस का सेल्स इंक्रीज कर पाए? Very good question there, yeah. See, nowadays people are very smart. Whether you're faking to them or whether you're being realistic to them. The very first thing that what you'll have to build is programming your mind. How do you program your mind and why do you program your mind? How do you program your mind is by listening to good deeds and good thoughts and working on the affirmation and start believing on something that you really spiritual or devotional. Right? And second thing, why this is important. See, you need to make sure that people should start trusting you. And trusting will only happen when they feel that you have a lot of experience, when they feel you're realistic, when they feel you're trustable, when they feel you have a lot of credibility. Nowadays, anyone can go and make 2 minutes ka testimonial. Nowadays, anyone can go and bring 5-star reviews. But people are done with all this shit. Makes sense. They want the reality. Even now, if you go open the Razorpay account or the InstaMojo account, they're like, हाँ तो बनाया, लेकिन how will I do? Right? To answer this question, make sure that your intent is very right from the start. You're here to serve the people. In exchange, you want to make money. Not to make money, you'll have to serve the people. Right. And when your intent is so true, and when you fall in love in helping people's problem, in exchange, you're not getting bargained. You're just making them buy. Amazing, man. Amazing. संतोष भाई पता क्या है, हमारी जो वेबसाइट है ना, जो मेरी वेबसाइट है, वो बस सिंगल पेज वेबसाइट है, खुलते के साथ ही बंद हो जाती है। इवन इंडस्ट्री के जितने टॉप लीडर्स है, एक्सपर्ट्स है, सबके टेस्टिमोनियल उन्होंने मुझे बहुत पहले दे दिए, 2 साल पहले। बट मैं इतना समझ गया था इनको लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, या इनको करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लोग गो की आपको प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। यू हैव टू लुक आउटसाइड ऑफ द विंडो एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द मार्केट, एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ सॉल्यूशन फॉर दैट। एंड वही चीज़ होती है कि जो लोगों को बेचने पे मजबूर कर, खरीदने पे मजबूर कर देती है बेसिकली। एंड ये चीज़ मैच्योरिटी, ये जो मैच्योरिटी है, ये 2022 के अंदर आनी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जैसे ही हम अपनी कम्युनिटी में कनेक्ट हुए तो वहाँ से और ज़्यादा ही क्लियर होनी स्टार्ट हो गई थी। एंड आई लव दिस कि ये मुझे अर्ली एज में पता लग गया कि कैसे करना है। एंड संतोष भाई एक बात करता है कि वी आर वेरी पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स, हम बहुत काम करते हैं दिन रात, एंड दिन रात भी नहीं देखते कि हम कभी भी बात कर रहे हैं, मैसेज आ रहा है 2 बजे 1 बजे, हम हमेशा एक्टिव रहते हैं, ज़्यादातर कि पता लगता है कि बंदा यार काम कर रहा है। तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि मेरा एक ड्रीम है, मतलब मुझे एक यूनिकॉर्न बिल्ड करना है, मतलब ये मैंने सोचा है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि कोचिंग इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक लिमिटेड है, कंसल्टिंग वाला जो एक लिमिटेड है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द यूनिकॉर्न पार्ट, बिकॉज हम एंटरप्रेन्योर तो दिमाग में रहता है कि यार हमें वहाँ लेवल पे पहुँचना है, वो चीज़ करनी है। तो अगर किसी को यूनिकॉर्न बनाना होगा तो उसको क्या चीज़ें करनी होंगी, या किस तरीके से वो कर सकता है? क्योंकि पता हमको सारी चीज़ें कि अच्छा अश्नीर ग्रोवर ये कर रहा है, इसने ये करा है, इसने वो करा है, हमें पता है कि क्या बिजनेस है, क्या मार्केट है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में इतने सिस्टम प्रोसेस देख के हम घबरा जाते हैं कि यार ये हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत ऑलरेडी मार्केट में है। तो वो कॉन्फिडेंस और ऐसी क्या चीज़ इंसान कर सकता है? See, there are 3 businesses that you can definitely work in order to become a unicorn. See, as I was watching one of the shows of Figuring Out Raj Shamani's ka show, even he was talking with one of the very good entrepreneurs, even he tells the same. See, number one is
See, of course, you're doing a lot of money with your high ticket selling or webinars or master classes or the paid workshops, which is fine. But what are you doing with that money? Are you making money to build money for you? Or are you just being dildar and then enjoying the life at the cost of doing the webinars, right? The three important things that what you want is, number one, service-based business. You know, at Jordan of Ads right now, we are working completely on food and beverages e-commerce stores. And then we are trying to expand it into a very huge thing. So if at all my service-based business is really good here, then I'll start exporting my service-based business outside the India, be it UAE, be it UK, be it US, so that you're getting in exchange of currency with their currencies for the Indian amount, which is very one thing, and then expand the services. That's what even Infosys did. That's what even TCS did, right? They all went into the service-based business. Like, get the service from there, get it done in India, earn in dollars and spend in rupees. Number one is service-based business, right? And number two is D2C business. D2C business is one such e-commerce business. Let's say the Skippy Ice Pops. As you already mentioned about Ashneer Grover, these people were doing really good here. But when they thought of doing with respect to scalability, they researched a lot. They worked a lot. They made a lot. And that is when Ashneer told them, why don't you try check it out with UAE market? Arab market. Why don't you go check it out with the market like, the Dubai wala, Abu Dhabi wala. Just go check that market. Immediately, they thought about scaling. They scaled in India. At the same time, they also thought of making it international. So they started scaled in Arab countries too. And now their revenue is 1 crore per month. Wow. Right? So coming back to your question there, yeah, the D2C, you can scale like anything. Just don't think of India, think of going global. You can do it right by sitting in India, by working remotely. And convert your coaching and consulting businesses into service-based businesses. Even at Jordan of Ads, we sell our services to lot many different people with lot many different prices. So convert your coaching and consulting businesses into service-based business. Transform it, pivot it, number one. Second thing, try opening D2C stores. Very, very important. And third thing, build a SaaS so that it keeps giving you revenue like anything. So these are the three important businesses. Now, coming back to building a unicorn. The first thing what you need to learn is learn how to sell. Don't worry about where do I lift funding, how do I get funding. There are so many bootstraps in India that you can see right now. Be it Zoho, be it Zerodha. There are so many unicorns which are bootstrapped, yet owning all the shares, yet making a lot of money without mulching or without burning the money. You can definitely do it, provided you have right mindset, right priority, right focus, and right principles, and having the heart of sales. As long as you don't have the art of selling, you don't win the game. Right. Completely makes sense. संतोष भाई, मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई थी, आपने एक वर्ड बोला था, मैं इस पॉडकास्ट में अभी उसको रिवील नहीं करूंगा कि किस चीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ. बेसिकली इतना पता है कि आई हैव अ रोड मैप टू बिल्ड अ यूनिकॉर्न एंड वी आर वर्किंग ऑन इट. एंड जब लॉन्च होगा पता लगेगा, और वो ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या चीज़ है वो. एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट, क्योंकि वो चीज़ आपको भी करनी है और वो चीज़ मुझे भी करनी है. On the way to it. Yeah. So I'm super excited कि वो किस तरीके से शेप अप होगा, कैसे आगे जाएगा, क्या क्या सारी चीज़ें होंगी. एंड संतोष भाई, मुझे एक चीज़ जाननी है कि जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए थे, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, और अब करंटली क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो. जैसे हर किसी के बिजनेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है. मैं कभी भी किसी से मिलता हूँ ना, तो उसके बिजनेस की प्रॉब्लम पूछता हूँ, और जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं या जो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कर रहे होते हैं, उनके बिजनेस में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है. मैं उनसे मिलके उनकी प्रॉब्लम पूछता हूँ और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ. ओके, इसका ये सॉल्यूशन है, तो कितने लोगों की समस्या होगी, कितने लोगों की प्रॉब्लम होगी, और अगर मैं वो चीज़ उसे ढूंढ के दे सकता हूँ तो शायद वो मेरा क्लाइंट बन सकता है. तो मैं ये चीज़ हमेशा करता हूँ. जितने भी टॉप लोगों से मिलता हूँ तो उनसे प्रॉब्लम के बारे में ज़रूर बात करता हूँ. और क्योंकि वो चीज़ इतनी टफ होती है कि जब उसके अंदर घुसते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, तो हमें 10 चीज़ों और नहीं पता लग जाती कि ओ मैन, ये तो इस तरीके से होना था, और मैं इनको सॉल्यूशन दूंगा तो इनके लाखों करोड़ों बन जाएंगे. तो वही चीज़ मुझे जाननी है कि एक्चुअल में आपके क्या चैलेंजेस हैं
अभी कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर आप क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हो, क्योंकि शायद ऐसे सारे क्रिएटर होंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होंगे जिनकी वो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीज़ें फेस करता हूँ। जैसे मैसेजिंग वाला पार्ट था, मैं उसमें बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा था। इवन सेलिंग वाला पार्ट था, मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहा था। ऐसी आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या मेजर पेन पॉइंट्स हैं आपके? There, yeah, 2018 was the time wherein I came into this coaching industry. And that time I grew my Facebook page like anything. And then due to some reason, my Facebook page got banned, right? The reality is you need not be a strong influencer to build a coaching business. I don't know, I'm talking to you, but You are right. You are right. yeah, you need not because I know the pain point of influencers. If you focus on one thing, just focus on one thing. Even now, there are so many coaches, trainers, and consultants who are making net profits of 2 to 3 crores a month in India without working on social media. I'm not telling not to work on. Yeah, of course, I'm trying to start to work on about it. But I'm telling, make sure what's your priority. Second thing, every coach, trainer, or consultant is telling you to go buy tools, go buy tools, go buy tools. In exchange, you can make money, which is very wrong. I don't know name about the influencers who are doing that. I don't know name about the coaches and consultants who are doing that. You know, these people, they tell you very hardly to go purchase this, to go purchase this, to build a business. And they show you how to make up big dreams. And then they tell you to go purchase these tools. Bichara coaches and consultants who are trying to start right now after coming out from the college or dropping from the college, they don't have money. They go ask money from their parents, or they go loan it outside, and they bring all the money. Instead of working on the sales, instead of working on their advertising part, they get so busy on working on their tools and systems, which is so bad. Right. So coaches are influencing people to work on tools, to buy tools, so many tools, which will cost them 70,000-80,000 every single month. Right. You need not work on any tools. Work on your sales, work on the pitch, and try becoming as simple as you could. You know, one of our people in the community is also already trying to solve that problem. Right? There's a person called as Abdul Hakim. And that person right now is solving the problem of tools. Like everyone is selling it for 80,000. And he tells, come to me, give me 5,000, I'll give you whatever tools you want and build upon it. Which is almost like 150 rupees a day compared to 3,000-4,000 rupees a day. Right. Right? And there are too many things there, yeah. One is about the tools, which is people are very much behind affiliate marketing for the tools. If you want to make work on affiliate marketing, go work it. Go take money from the millionaires. Go take money from the people who are really in need of it. But don't come and hit all the people, those who are so fruitless to build their businesses. Right. Completely makes sense. And when I see your landing page, you started with WordPress. You're working on the WordPress with so less, with high speed, with so less any hitches. And then you're making it so good. And then you're driving people on Zoom and then making sales happen. Right. I don't find any big tools from your end. Right. So shall I tell you that you're a poor coach? No, not at all. Every month, as per my knowledge is concerned, you're at least making 20 lakhs a month. Right? So it's not about the tools. Learn about the sales. This is first thing. Second thing, many people tell, if at all I'm good at my expertise, I'll be able to sell anything. It's a very wrong thing. Expertise is different. Building a business is different. To build a business, learn the fundamentals of business. To enhance your expertise, become good at your expertise. Don't club both. Let's say you're a yoga teacher, you're really good at doing yoga. It doesn't mean that you can bring a lot of people just by doing the webinar, by showing by getting learned from someone else. You can do it only when you are able to persuade people. You can do it only when you're able to tell micro stories. You can do it only when you're really getting connected to people through their vibes. You can do it only when you're solving their problem. You can do it only when you're giving the right solution, which is making more fitable to them. In exchange, you're making money so that you're making them buy and not selling. This happens in one-to-one coaching. This happens in group coaching. This happens in webinars. This happens in paid masterclass. This happens in everywhere. See, to build a masterclass or the workshop,
Many people tell that you need to build so many tools and then you will be able to do it. There's nothing such way. You can easily start off with Pabbly and one integration on Zoom, you're done. Let's start making 1 or 2 lakhs in first 20 days and then let's start building something. And if at all the time comes to build on tools, of course we need to go for tools. Not right at the start. Completely makes sense. संतोष भाई पता है आई एम सुपर प्राउड कि ये बताने के लिए आई एम नॉट यूजिंग एनी टूल्स लाइक आई एम यूजिंग ओनली Zoom and ConvertKit for emailing. That's it. That's because your email list grew. That's the reason you wanted to use that. It was a necessity for you, not because somebody shared you an affiliate link by showing you the big dream Lamborghini Euros so that you can buy it. No, not that way. I understand that. I find so many people. There, yeah. Please continue. I find so many people who are telling you to go buy tools. I request all the coaches and consultants, please don't buy tools. Buy it when it is necessary. Buy it when your people are around 1,000 people, when your people are around 2,000 people, when you have a community of 2,000 people. Till then, don't buy tools. Master sales. Work on the beautification of your product. Work on the aesthetics of your product. Work on building your product. Work on your offer. Work on your persuasions. Work on your stories. Work on sales part so that you're not selling but making them buy. There is one major mistake with all these high-ticket coaches. Forget high-ticket coaches, of course, they're good. But when it comes to these people, webinars and masterclasses, they become so sweaty during the event because they're worried, if this integration happened, people came through this, this happened, I'll have to come in. Because even you have faced it. Yes. I faced this problem. And जब इन चीज़ों के ऊपर काम करना स्टार्ट किया तो पता लगा कि चीज़ें बहुत सिंपल हैं. हमने ही उसको इतना कॉम्प्लिकेट बना के अच्छा फनल होना चाहिए, ये होना चाहिए, पेबली, ऑटोमेशन, ज़ेपियर, फलाना ढिमकाना, इतनी सारी चीज़ें इनकी ज़रूरत ही नहीं है. एक्चुअल में इनकी ज़रूरत ही नहीं. और लोग ज़्यादातर जो इंगेज रहते हैं ना, मैंने देखा है सिस्टम और प्रोसेस में भी फंस के रह जाते हैं, तो वो स्केलिंग वाला पार्ट ही नहीं आ पाता. और सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये देखी है कि कभी मेरे सिस्टम प्रोसेस कभी फिक्स नहीं हुए. हमेशा किसी में ग्लिच आ रहा है, कभी किसी में प्रॉब्लम आ रही है. और मैं एक एंटरप्रेन्योर से बात कर रहा था, उनकी एजेंसी, बहुत बड़ी एजेंसी है उनकी इंडिया की, एंड उनके भी आज तक सिस्टम जो प्रोसेस है वो कभी ठीक नहीं रहे. उन्होंने कहा कि हमेशा ब्रेक होते रहते, धैर्य ये होता रहता, वो होता रहता है. वो इसलिए क्योंकि हमने उनको कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, हमने उनको सिंपल नहीं बना रखा है, हमने उसमें 10 चीज़ें लगा रखी है. और जब मुझे ये चीज़ पता लगा कि स्केलिंग का पार्ट कब आता है, लोग बिजनेस की बात करते हैं, 1 करोड़ जा रहा है, 2 करोड़ जा रहा है, कैसे जा रहा है. तो फिर मैंने उस चीज़ के ऊपर बैठ के मंथन करने की कोशिश करी. मैंने बैठ के सोचा उसके बारे में कि धैर्य, फर्स्ट यू नीड टू सॉर्ट आउट एवरी सिंगल थिंग, कि उसको पहले कॉम्प्लेक्स से सिंपल करो. जिसकी ज़रूरत नहीं है, क्लटर को जस्ट कट इट आउट एंड थ्रो इट. सबसे पहले जो कट चीज़ें करी, उसके बाद देखा कि ओह, सिस्टम एंड प्रोसेस आर वर्किंग नाउ लेट्स चेक आउट द मैथ्स. इतना डालना तो इतना निकलेगा, इतना डालना तो इतना निकलेगा. तो स्केलिंग पार्ट अब जाके समझ में आया कि बेसिकली एक्चुअल में स्केलिंग पार्ट होता क्या है. एंड थैंक्स टू आवर कम्युनिटी कि एक से एक एक्सपर्ट लोग हैं वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ सीखने को मिल रही है यहाँ पे. एंड संतोष भाई, आपका क्या थॉट है कोचिंग इंडस्ट्री को लेके कि कितना ग्रो करने वाली है और कब तक चलेगी, क्या सैचुरेशन पॉइंट हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं, इवन हाई टिकट कब तक चलने वाला है, इवन जो लो टिकट में लोग काम कर रहे हैं, कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि क्या है बेसिकली. Can I be very honest on this? Yeah, please be brutally honest. See, the point of the fact is now, today, every person who comes in wants to teach people how to become a coach. Yeah. Wants to teach people how to become a consultant. But there are a lot of yoga teachers, dance teachers, architects, designers, consultants, construction business. When you consider business of consulting someone through your consulting business, that is when the consultancy grows. Right. When you want to teach people on your expertise through the model of masterclasses, through the model of courses, through the model of workshops, through the model of something, all of these things are mediums. As long as you are solving the problem in your particular genre, in your particular category, in your particular business, and then want to establish into a coaching and consulting business, that's when you'll be able to scale it. But if you want to teach people on how to coach, how to consulting, I don't think so you have a great life.
E-learning has the scope from now to next 25 years. But if you want to teach people on how to make money on building a coaching business by becoming a coach, again, it's the MLM scheme. I don't think so it will last more than 7-8 months. अमेजिंग, ओके। और मुझे भी लगता है क्योंकि पहले लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, जो भी उनके अंदर स्किल थी वो पढ़ाना स्टार्ट किया। उसके बाद जब उनको वो सैचुरेट हो गया तो उन्होंने सोचा कि बेसिकली अब हमें ये करना चाहिए, कोचिंग में आना चाहिए और लोगों को सिखाना चाहिए किस तरीके से कोचिंग बनाई जाती है, किस तरीके से करी जाती है। एंड एट द एंड ऑफ द डे इतने सारे कोचेस बन जाएंगे तो सैचुरेट डेफिनेटली होने वाला है। लेकिन आप जब किसी पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीरियर डिज़ाइनर्स है और उनको सेल करने में प्रॉब्लम आ रहा है, अगर पर्टिकुलरली हम उनको पकड़ के, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर एक दो तो है नहीं इंडिया के अंदर, बहुत सारे हैं, ग्लोबली बहुत सारे हैं। एग्जैक्टली। और अगर कोई इंसान इस तरीके से सोचे और उनको टारगेट करे, उनके लिए सारी चीज़ें क्राफ्ट करे और उनको सॉल्यूशन दे ऐसा बुलेट प्रूफ, तो डेफिनेटली उन्हें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। एंड विद no doubt. 5-6 मंथ के अंदर वो इसको वो कर सकता है, क्रैक कर सकता है कि ये कैसे होंगी चीज़ें। अमेजिंग, अमेजिंग। सो या प्लीज। Yeah, when it comes to consulting business, we have another wing which is called as Jordan of Ads. Over there, we are advertising consultants on how to run your business on food and beverages e-commerce stores. Right there, we see multiple amount of people. It's not about only client qualifying us. It's something that we need to qualify clients as well, whether they are the right fit or not. Right? And once that is done, then you can go ahead with the client rather than having a bad client and then breaking your head every day. Right. This is one thing. And as you already told about interior designing, I have so many different people who come to me. There are interiors, there are architects, there are civil engineers who tell that I want to make money online, I want to build a coaching business. And when they come here, and when I tell them to work on your genre, they say, no, I don't want to do that. I want to help people on how to build their coaching business. Bhai, why are you coming into this? Right? So, if at all you're very good at architecture, I'll show you how to bring a 2 lakh rupees ka client through the system of the sales, of the persuasion, of the method, of the unique methodology, which you don't have to worry on. Why do you want to come inside this? Build your architecture consulting business, which people need to think about it. संतोष भाई, एक बहुत बड़ा सवाल है जो बहुत बिजनेसमैन के दिमाग में रहता होगा। इवन बहुत सारे बिजनेसमैन इसके अंदर फंसे रहते हैं, बड़े से बड़े। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 2 चीज़ होती है बिजनेस में, एक नए क्लाइंट को लेके आना और एक पुराने क्लाइंट को रिटेन रखना है, उनको सेटिस्फाई करना। ज़्यादातर लोग लगता है कि नए क्लाइंट लेके आने, नए क्लाइंट लेके आने, और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है जो उनको पैसा दे रहे हैं उनकी तरफ थोड़े कोल्ड हो जाते हैं। राइट। एंड एक और चीज़, मैं इस पॉइंट से पहले इस पर बात करेंगे, लेकिन आपने एक जो चीज़ बोली ना वो बहुत बढ़िया थी जिससे मुझे टेक लेना चाहिए, कि आप ये बोल रहे हो कि हम क्वालिफाई करेंगे क्लाइंट को। दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी मैंने इस चीज़ से सीखा। अभी हम भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं कि हम हर किसी को नहीं लेते हैं कि हम आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि वो आपके रिस्पेक्ट नहीं करता है फिर उस तरीके से। जब हम उनको बताते हैं कि भाई वी आर द कंसल्टेंट एंड विल डिसाइड वेदर वी वांट टू वर्क विद यू और नॉट, कि आपकी प्रॉब्लम है हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन है, लेकिन वी विल डिसाइड वेदर वी वांट टू वर्क विद यू। एंड जब ये चीज़ें मुझे पता लगी, हमारा बिजनेस ग्रो होना स्टार्ट हुआ और हमारे पास अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छे लोगों से हम काम कर रहे हैं। क्योंकि उससे पहले तो मैं बहुत गालियाँ खा रहा था अपने क्लाइंट से। मेरे क्लाइंट मुझे गालियाँ दे देते थे क्योंकि उन्हें रिस्पेक्ट नहीं थी। अच्छा आ गया, पैसे मांगेगा, पैसे हमारे लिए काम ही तो कर रहा है वो, लेकिन उनको उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं थी। लेकिन नाउ जब ये चीज़ें हमने क्रैक कर ली तो हमें पता है कि दे विल रिस्पेक्ट अस एज वेल। उनको पता है कि भाई ही इज़ अ बिग कंसल्टेंट, ये छोटा मोटा कोई आदमी नहीं है। एंड हाँ भाई, कमिंग टू दैट पॉइंट, कि ये वाला जो पार्ट है कि नए क्लाइंट पे फोकस करना चाहिए, रिटेन करने पे फोकस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो नए क्लाइंट में लाने में लगे रहते हैं, नए। और इस दोनों में आप किसको वेटेज देने वाले हो, क्या करने वाले हो इन दोनों चीज़ों में से आप? So how do you retain the client? This also I learned from Abhishek Garg, who has built a business called as Make Your Agency.
and who has built a business called as Socio Ninja. And he taught me about how do you retain the client without losing the ability, without reducing the price in order to increase the price, right? Why, when it comes to retaining the client, you need to make sure before retaining any client, you need to have the weekly calls compulsorily. And those weekly calls should be purely of review calls. What and all you did, how and all you did, how is the result, and why do you want to do something in future with this? Client need results. At the same time, client need validation on what you did, on how you did, on why you did. Even if you don't get results, if you validate him on how you did, what you did, and why you did, he'll stay with you forever. And when the quality and service is really good with that, I think you'll be able to grow your business like anything. संतोष भाई, एक बिजनेस का एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, थोड़ा डीपली डिस्कस करना चाहता हूँ इस बारे में, which is unique methodology. What is that? See, basically, let me not decorate the sentence and talk to you. Let me be very straight absurd. Unique methodology is nothing but, if you would have asked me the same question 10 years back, I would have told you the USP, unique selling proposition. But now, if you ask me what unique methodology is, it's nothing but your swag. It's nothing but your style. It's nothing but your trust. It's nothing but your intention. Along with it, creating a formula that matches people. The formula that you're using should be emotionally compelling, strongly disrupting the problem, and mainly working on something that people literally want after solving the problem to get a result. And these three combination is nothing but unique methodology, Bhairya. Amazing. And this is something which is very, very important for every single business in the world. संतोष भाई, एक चीज आ रही है मार्केट के अंदर और वो डरा रही है लोगों को, एंड उसके हमारे बीच में बात हुई थी उससे रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आपका क्या टेक है उस चीज के ऊपर कि क्या बेसिकली उससे क्या चेंजेस आ सकते हैं मार्केट के अंदर, उसको लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? Artificial intelligence will swipe out 70% of non-quality people, low-performing people. And let me tell to all the entrepreneurs, don't just ride the wave. Along with riding the wave, learn how to survive and go ahead with the next wave. See, AI and ML, artificial intelligence and machine learning, when it comes to copywriting, when it comes to video editing, when it comes to building a video, when it comes to VR, there are so many things in it. Just be good at it. Just try to adopt those things and see what best you can do it. Even now, I can tell you, artificial intelligence is kind of lacking the emotional intelligence that what people have. It can write on what I prompt on. It can write on what commands I give. But giving the commands is me only, na? Right. Artificial intelligence is one such catalyst of a tool, but it is not everything. Right. So it's completely like कि अगर आपके हाथ में नाइफ है और आपके हाथ में गन है, and AI is like a gun कि जो 100% कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो, fast 100%. It can't replace the area. Yeah. But it can help the area to grow fast using its method. Makes sense. संतोष भाई, हमारी बिजनेस के बारे में बहुत बातें हुई, बहुत इंटेंस पॉडकास्ट हुआ है, और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट को ना जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होंगे ना वही टिक के देख पाएंगे, क्योंकि नहीं तो आधे से ज़्यादा लोग इसी प्रोसेस में रह जाते हैं. सिस्टम क्या होता है, फनल क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ों में फंस के रह जाते हैं. एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटेंस एंड हार्ड टू डाइजेस्ट,
क्योंकि ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है विच इज़ लाइक वेरी डीप एंड वेरी इंटेंस. आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमारे पॉडकास्ट इतना इंटेंस गया और लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर वो पूरा देखते हैं इसको. एंड संतोष भाई, just do you want to throw some numbers that how much money you are making right now in a month? Just एक ऑडियंस के लिए मोटिवेशन कि कंसल्टेंट कितना कर सकता है, कि कितना ग्रो कर सकता है इवन इन कोचिंग. See, there was a time where I lost all the money on building businesses with respect to franchising, wholesale trading, these all stuff. Yeah, I'm making very good money. When it comes to Jordan of Ads, right now we are around 37 to 38 clients with the 4-member team. And we are around charging 1.5 to 2 lakhs outside India. And inside India, it is little less. So that's how it is. And when it comes to business tattva, we are helping people to build on business fundamentals. That is making 9 figures in Indian rupees. Wow. And when it comes to make them buy a selling course, the product funnel, which is about to get launched, I think that should end up with very good numbers so that we are very soon building on something really great. अमेजिंग. ये नंबर फिगर्स बहुत अच्छे हैं एंड मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ इन नंबर्स को देख के. एंड जो मेरा ड्रीम है हम उसकी तरफ काम करना स्टार्ट कर दिया. एंड सूनर और लेटर पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, लेकिन इतना पता है कि हो जाएगा. कि आई जस्ट वांटेड टू बिल्ड दैट यूनिकॉर्न जिसके ऊपर अभी मैं काम कर रहा हूँ. एंड आई रियली वांटेड टू डू दैट, क्योंकि वहाँ तक कम लोग पहुँच पाते हैं और बहुत मुश्किल होने वाला है वहाँ तक पहुँचना, पता है. बट आई एम रेडी टू टेक ऑल द पेन्स. एंड संतोष भाई, थोड़ा सा पर्सनल बातें करते हैं. थोड़ा सा हमने बिजनेस के बारे में बात कर ली, एआई के बारे में बात कर ली, यूनिकॉर्न्स के बारे में बात कर ली, बहुत सारी चीज़ें बात करी है. यू आर अ मैरिड पर्सन, राइट? सो आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं कि शादी से पहले का एक्सपीरियंस क्या है और शादी के बाद का क्या एक्सपीरियंस है. See, I have a very strong take on this, which is Stree Shakti. Before marriage, I had 2 women who used to always take care of me. That is my mom, that is my sister. After marriage, I had... Sorry to cut you, उससे पहले और भी हो सकता है कोई टेक केयर करता हो आपका? Nothing as such. There was no time at all for anything, right? After marriage, I got one beautiful wife who is my life, who is even now taking care of me like anything. Because there you get to know about the person not when you're good. You get to know about the person when you're completely at hard times. At every hard time of my time, my wife always stood with me. Always stood with me, even now and even forever. The same with my sister, the same with my mother. Like, they're always with me. No matter what happens, they're always with me. So if at all you want to grow, it's not only about your tactics. It's not only about your strategy. It's not only about your emotional intelligence. It's not only about, the something that what you have. It's more about the family. It's more about the relationship. My mom, my dad is a superhero for me. My wife, my sister, my mother. I can't put them in order. Everyone is so good to me. And with every hard time, my wife was with me. With every hard time, my sister was with me. With every hard time, my mother was with me. And when you have these 3 people, then you can achieve anything and everything in the world. भाई, कुछ ऐसी एडवाइस जो आप मेरे लिए देना चाहते हो कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए आगे लाइफ के लिए? So let me tell you the important thing about you. You're a very quick action taker. If you see something right now the time is, let's say that right now the time is 12 a.m. If you want to improve something, you learn everything before 12:30. At 1 o'clock, you have that launched. First important thing. That's how you're able to scale your business like anything. So when it comes to improvisation, I don't know whether I'll have to reveal that or not. Right to it. Right now, we are working on 2 businesses. One is the beautiful SaaS that is coming out. One more, which I don't want to reveal of it. And the other one is consulting business. I want you to work on one thing at a time. Not that unless this is finished, you want to go to that. But make sure when you're working only on this, give you 100% on this.
and then give 100% on the other thing. Right. That's what even I tell in one of my productivity course on how to make 90 days of work in 30 days without losing your mind. So make sure that you give your Zen focus to it. And once that is achieved, give a 5 minutes break and then get into the other business. Right. There's nothing extra that I'll have to tell you. You're best at everything. थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। और मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूँगा। बेसिकली ये स्टेप मैं धीरे धीरे उठा रहा हूँ, मैं एकदम नहीं उठा रहा हूँ ये स्टेप कि जैसे कोचिंग वाला है, हमारा अच्छा बिजनेस चल रहा है। एंड मुझे लगता है कि जो मेरी माँ का बिजनेस है बेसिकली वो साड़ियों पे जो बनाती है ऑर्गेन्जा की फ्लावर्स वगैरह, एंड आई रियली वांटेड टू गिव हर अ प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे उन्होंने इतने साल 30-40 साल आर्ट करी है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो आई एम थिंकिंग अबाउट दैट एज वेल। तो मुझे लगता है कि घुसना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा है कि अभी मैं नहीं भी रहूँगा तो यहाँ पे ये बिजनेस चल जाएगा। तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे इस पे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, फ्रेमवर्क पे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया। बट आई टेक केयर ऑफ योर एडवाइस की जो आपने मुझे दिया, दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड यू नो कि मैं हर एक एडवाइस बहुत बहुत ध्यान से सुनता हूँ। I know that. सो संतोष भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट, एंड इतना वैल्यू देने के लिए, इतना समय देने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। एंड soon I'm coming to Bangalore to meet you. Sure. I just wanted to eat dosa over there. Anytime there, yeah. Sure. Thank you so much for inviting me. Stay blessed, stay calm, stay happy, stay humble. God bless. Take care. Thank you, bhai. Thank you so much. Welcome. I hope guys आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इससे। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप जिस भी नेक्स्ट गेस्ट को चाहते हो कि मैं इंटरव्यू करूँ, अपने पॉडकास्ट में बुलाऊँ, उनका नीचे कमेंट करके नाम ज़रूर मुझे बताओ कि आप किस इंसान को देखना चाहते हो कि हम अपने पॉडकास्ट पे लेके आए और उनसे क्वेश्चन करें। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे और आप पर्टिकुलर जिस इंसान को चाहते हो उसका नाम लिखो, और क्या हमें क्वेश्चन पूछना है इवन वो भी आप नीचे कमेंट करो, वहाँ से हम पिक करके उनको इनवाइट करेंगे और उनसे सेम क्वेश्चन करेंगे। तो आपके कमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जो नेक्स्ट गेस्ट होने वाले हैं वो 100 करोड़ से भी ज़्यादा कमा चुके हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट आएगा 5 साल के अंदर। गेस करो वो कौन है, नीचे कमेंट में करके ज़रूर बताना कि वो कौन हो सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो नेक्स्ट पॉडकास्ट आप मिस कर दोगे। बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, क्योंकि नेक्स्ट पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। एंड मैं आपको बता दूँ, अगर आप ट्रेनिंग, कंसल्टिंग और एजेंसी ओनर हो, हमारे पास आपके लिए एक प्रोग्राम है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हमारे कोर्स में आते ही स्टार्टिंग में विदिन 4 वीक्स के अंदर लोग पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं, और हमने केस स्टडी, रिजल्ट, सारी चीज़ें यूट्यूब पे डाला हुआ है रेवोल्यूशन विंस के नाम से। हमारे नई सक्सेस स्टोरी हर दिन बनते जा रहे हैं। अगर आपको भी हमारी सक्सेस स्टोरी के अंदर आना है तो नीचे हमारा लिंक है digitaldirect.com/creator-revolution। वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देखो और जाके देखो कि आप ये चीज़ कर पाते हो, वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट, क्योंकि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे इंडिया की लाइफ बदलने वाला है। एंड आई एम प्रिटी मच श्योर, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं। आई होप गाइज आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। सी यू गाइज, बाय बाय।